गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू ऑल हैव सीन द वीडियो ऑफ माई मदर एट 66. सबने देखी थी वो वीडियो? यू ऑल अंडरस्टूड दैट पोएम माई मदर एट 66. वेरी नाइस पोएम. If you are having any doubt, please drop the question in the comment box. Today we are going to start with the first chapter of the Flamingo, that is the last lesson. See, what is the contradiction, what is the oxymoron existing between this? The first lesson is the last lesson. This lesson is written by Alphonse Daudet. Who? Alphonse Daudet, who was a teacher but later he became a generalist and written many poems and other literary work also. He born on 1840 and died in 1897. He belongs to France. He has spent his life in Paris. Okay, Paris, which is a part of France. So there are many questions arising in your mind also, that why this lesson's title is the last lesson. So before knowing about the title, let's see what is the background of this, because this is really very important to know what is the background of this last lesson. Why the last lesson is named as last lesson, what is the reason behind, and what is the background in which situation this lesson has been set up. So the last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, which was held in 1817 to 1871. बच्चों, फ्रैंको-पर्शियन वॉर 1870 और 71 के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट जर्मनी के हाथ में चले गए थे. इट मीन्स उन्होंने उसके 2 डिस्ट्रिक्ट पर अपना कंट्रोल कर लिया था. दे हैव जस्ट ओवरकम देयर 2 डिस्ट्रिक्ट नेम Alsace and Lorraine. Okay, and in that France was defeated by the Prussia led by Bismarck. It means when the war was taken place in 1870 and 1871, उस लड़ाई में, उस वॉर में France was defeated by Prussia. Now Prussia was basically, now you are not hearing the name of Prussia. Basically at that time Prussia was a big country which was consisting now at present. आज आप जो देश देख रहे हैं, जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये सारा मिलकर क्या बनता था? रशिया. ठीक है, यानी कि आज का जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, इन तीनों को मिलाकर जो है एक कंट्री था ये पूरा रशिया. इसने किसको? फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट को जीत लिया था, वो उसके हाथ में चला गया था. फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? Alsace and Lorraine. That was passed into the Prussians' hand. Now, one more important thing you must know about the characters in this chapter. There are 3 main characters. Sorry, 2 main characters. One is just for a appearance. Franz is a student, or you can say a little boy. Okay, he's a student also. He is a French boy. He is a French boy. It means he is living where? In France. M. Hamel, he is a French language teacher. M. Hamel is French language teacher. And the third, Watcher blacksmith. Only his one appearance is there. Basically, this story moves around M. Hamel and Franz. One teacher, one student. Teacher and student. So let's move towards the story. Why this chapter got the title the last lesson? इसको last lesson क्यों कहा गया? बच्चों, किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस हमें तब पता चलती है जब वो हमारे हाथ से छीनने लगती है. When that thing is going to be missed and lost by us, then only we can realize the importance of that thing. In this chapter also, आपको मैंने पहले बताया कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन वो किसके? प्रशिया के हैंड्स में चले गए थे, उसने जीत लिया था. तो अब
कोई भी देश जब किसी को जीत लेता है तो वो चाहता है वहां पर उसी की रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन सब उन्हीं का फॉलो हो। वो अपनी क्या है, एक उनकी डिक्टेटरशिप हो जाती है। यहाँ पर भी पर्शिया के हाथ में जब फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट चले गए, अल्सस एंड लॉरेन, तो वहां पर उन्होंने क्या ऑर्डर पास कर दिया, दैट नाउ ऑनवर्ड्स जर्मन लैंग्वेज इज गोइंग टू बी टॉट इन दोज डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब वहां पे क्योंकि पहले वो फ्रांस के अंडर में था, तो वहां पे कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, फ्रेंच। मैंने अभी बताया एम हेमल फ्रेंच टीचर थे। फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड कहाँ का है आपका, कहाँ का है बेटा, अभी बताया मैंने, फ्रांस के साथ किसकी लड़ाई हुई थी, पर्शिया की। इट मीन्स फ्रेंको पर्शियन वॉर, ठीक है ना, विच वॉज टेकन बिटवीन 1870 to 71, जिसमें कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट उसके हाथ में चले गए थे, किसके हाथ में चले गए थे, पर्शियन के। किसके डिस्ट्रिक्ट, फ्रांस के। तो अब वहां पर ये अनाउंसमेंट हो गई है किसके द्वारा, पर्शियंस के द्वारा, कि नाउ ऑनवर्ड्स जर्मन लैंग्वेज इज गोइंग टू बी taught in the district of that France, which is in Alsace and Lorraine. Now that is the reason, because that was the last chapter is being taught in the school by M. Hamel. कौन लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, M. Hamel, इसीलिए इस लेसन को क्या नाम दिया गया है बेटा, लास्ट लेसन। नाउ दिस स्टोरी बिगिंस विद द इवेंटफुल डे, यानी कि एक कैरेक्टर मैंने अभी आपको बताया, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, व्हाट इज द नेम, फ्रेंड्स, हु इज अ लिटिल बॉय हु इज अ स्टूडेंट। नाउ इन दैट मॉर्निंग, फ्रेंड्स, सुबह सुबह जब आप भी उठते हो, कभी कभी लगता है कि स्कूल जाएं नहीं जाएं, इतना बढ़िया मौसम है, लेट्स एंजॉय एट होम, घर पे फन करेंगे या बाहर जाके थोड़ा घूम के आएंगे, पिकनिक मना के आएंगे। बट जैसे ही याद आता है, ओ माय गॉड, उन सर का, उन मैम का लेक्चर मिस हो जाएगा, पिटाई होगी, डांट पड़ेगी, क्या एक्सक्यूजेस देंगे, देन इमीडिएटली हम अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं और एनी हाउ हम अपने मूड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नेगेटिव से पॉजिटिव में। किस चीज की नेगेटिविटी, वी आर नॉट रिलेक्टेंट टू, व्हेन वी आर जस्ट रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल, then we have to change our mind and we have to have a will to go to school just because of the fear of our teacher. The same happened here also. This was the very eventful day, friends, who didn't want to go to school. Now every time there is certain reasons why you don't want to go to school. The same way Franz was also not willing to go to school. There were main reason, one reason, because he has not learned the rules of participle, because he had been assigned some homework by his teacher. Who was his teacher? M. Hamel. M. Hamel was the French language teacher. He has assigned him some work. He has given him some work. उसको क्या दिया हुआ था, rules of participles learn करने के लिए, but उसने learn नहीं किया। पहला रीजन ये, this is the one reason। ये क्वेश्चन भी आता है बेटा बोर्ड एग्जाम में, why Franz was reluctant to go to school. Reluctant, it means he was not willing to go to school. So that is one reason, because he has not learned the rules of participle. Another reason, M. Hamel, the French teacher, was very strict. कभी कभी जब आपने कई बार होता है ना, एक मैम ने इनका काम नहीं किया, अरे कोई बात नहीं, मैम तो कुछ नहीं कहेंगे, एक एक्सक्यूज बता देंगे, बट समटाइम्स some teachers are very strict at that time. Whenever you are going to imagine about their face, you immediately get scared and you start doing your work. So that's why, because his work is not complete and he knows that M. Hamel is a very strict teacher, he is going to be punished. And another thing, because he was tempted by the weather. This is the second reason, and this is the third reason, because he was tempted by the very pinkish weather, very sunny morning is there, very pleasant morning is there, and he wished that he want to enjoy the morning, that beautiful, that sunny morning. He want to just, कई बार होता है बच्चों को लगता है जाएंगे वहाँ देखेंगे छोटे छोटे घोंसलों में चिड़िया के ने अंडे दे रखे हैं, बच्चे उसे देखते हैं। और यहाँ पर क्योंकि पर्शियन ने अभी अभी फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट को अपने अंडर में लिया है, तो वहां पे जो उनके सोल्जर्स हैं, पर्शियन सोल्जर्स, दे आर जस्ट मेकिंग अ ड्रिल
दे आर प्रैक्टिसिंग अबाउट द परेड. वो परेड कर रहे हैं वहाँ, वो मूव कर रहे हैं, वो रोमिंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं. तो वो उसे ये भी देखना, क्योंकि जब परेड की ड्रिल होती है तो बच्चों को वो देखना, वो बैंड, वो साउंड बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है. तो यहाँ पर फ्रेंड्स के लिए 3 टेम्पटेशंस थी. 1, प्रेफर्ड आउटडोर्स, इट मीन्स बाहर वो जाके एंजॉय करना चाह रहा है. दूसरा, उसको ये भी डर है कि अगर उसने रूल्स लर्न नहीं किए उसकी पिटाई होगी. और एमएमएल बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए 3 रीजंस की वजह से वो स्कूल जाना नहीं चाहता है. बट फाइनली ही हैज कन्वर्टेड हिज माइंड, बिकॉज कई बार होता है हम सोचते हैं छुट्टी ले लें, लेकिन नेक्स्ट डे क्या जवाब देंगे, टीचर पूछेंगे क्यों नहीं आए थे, एब्सेंट होने पे भी पनिशमेंट मिलेगी. इसीलिए एमएमएल का चेहरा याद आया, that he is going to be punished by him for being absent. That's why he immediately made up his mind to go to school, and he was hurriedly going towards his school because he is already late, as he was just thinking he should go or not. So as he was very late for the school, so he was making hurry and very fast he is going to school. On the way, when he passed near the town hall, he saw the bulletin near the bulletin board. Crowd was there and they were reading something. अभी आपको मैं बता दूं बेटा, जब भी भाई, क्योंकि वहां पर 1 साल से लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, किसमें, फ्रैंको पर्शियन वॉर अभी बताया. तो वहां पर उन्हें लग रहा है कि पिछले 1 साल से हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज उन्हें मिलती रही है, कोई ना कोई बैड न्यूज, क्योंकि उसमें जो फ्रांस है वो वीक पार्ट था, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसके पास हमेशा बैड न्यूज आती रही है कि हमेशा कोई ना कोई लॉस होता रहा है उन्हें बैटल में. ठीक है, तो मुझे लगा कि हो सकता है रोज टाउन हॉल के पास लोग बाहर बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज पढ़ने के लिए, जैसे आपके स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन है वो नोटिस बोर्ड पे लग जाती है. आजकल तो आप न्यूज वगैरह सुन लेते हैं, लेकिन पहले जो न्यूज थी वो कहाँ पे, टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड पे वो न्यूज, वो मैसेज आ जाता था, वो लग जाता था. तो वो लोग पढ़ने के लिए दे वर जस्ट surrounded over there. When he passed from that town hall, when he was just checked, he was asked by watcher that don't make haste as there is still lots of time. Now he has taken this word as a taunt. कई बार होता है कि हम लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए और हमें कोई कह दे, अरे अभी बहुत टाइम है और जल्दी क्यों जा रहे हो बेटा, थोड़े और देर से चले जाना. वी आर जस्ट टेकिंग इट एज अ टॉन्ट, कि भाई वो हम पे टॉन्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं इसीलिए. नाउ हियर ऑल्सो फ्रेंड्स ऑल्सो थिंक वॉचर दिस ब्लैक स्मिथ, ओनली हिज वन रोल इज देयर दैट ही चेक्ड फ्रेंड्स फॉर why he is making so haste to go to school, as there is still plenty of time is there, as he has already read the bulletin board, and that board was saying, that board was having that message that from the next day that French language is not going to be taught in their district. And that's why, as M. Hamel was the teacher over there, so most probably his last day is there, so he will not teach. So that's why he was saying that still you are having lots of time, there is no need to make haste. But ये question आता है बेटा, that watcher was commenting him or he was informing him rightly. So he was informing him rightly, but friends has taken it as a taunt or as a comment because he was already late and he was not aware about the news which was written on that bulletin board. So that's why now he make haste and reach to the school. And Hamel's garden was there. He crossed that garden and then he reached near the classroom. Now there was something unique. There was something unusual he saw in the school. That was quite unusual day for him. Yes. Now he reached near the classroom. And when he reached near the classroom, he observed something was unusual. कुछ अलग सा था उस दिन स्कूल में. Though M. Hamel was in the class, he was taking round. His ruler was under his arm. उसके हाथ में, उनके हाथ में अंडर आर्म स्टिक भी थी. But still, he was in such a grave mood, and the entire school was in very, very different way. How different way? Because generally whenever like this see here,
In routine day, what is there in class and in school? There is some noises is there. Lesson is being repeated loudly. आपने देखा होगा बच्चे मैम बोलती हैं, टीचर बोलते हैं और उनके पीछे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसे रिपीट करते हैं. Okay? And teachers ruler rapping, it means teachers used to rap their rulers. बच्चे शांत हो जाओ, keep quiet. It means such sounds used to come from the classes. But on that day, there was nothing like that. What is on that day? It means this is the routine day. Routine day, it means a different type of noise, you can say opening and closing of desks, and you can say some hustle bustle. A sound is there in the school which makes the school live. Lesson is being repeated loudly. Teachers ruler rapping sound is there. But on that day, all still as a Sunday morning. सब कुछ बिल्कुल शांत था, as if it was a Sunday morning, because Sunday is off day and definitely no student used to go to school, no teacher used to go to school. That's why on that day school remained very silent. There is no movement. It seems like a dead. So that's why what friends noticed that on that day school was seeming as if it was like a you can say off. It is not working, it is not functioning. It was just seeming as usually it seems on the Sunday morning. Classmates in place, जो उसके क्लासमेट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, सब अपनी अपनी सीट्स पे थे. कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे जनरली छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, मैम उसने मेरी पेंसिल ले ली, इरेजर ले ली, कोई एक बार बेंच से उठ के बाहर आ जाता है. So there is some sound also which make the class alive. But there was no activity like that going in the classroom. All his classmates were at their seat. Hamel was dressed formally. Another thing also, these are the points. What were the unusual things which he noticed? ये क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड एग्जाम में आता है. So the school was still as a Sunday morning. 1 point. Another 2, classmates were in place. They were sitting silently. It means generally teachers बोलते रहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. छोटे बच्चे कहाँ शांत होते हैं? They used to keep on talking. But on that day everyone was quiet. Anne Hamel was also dressed formally. Generally Anne Hamel जो सिंपल कपड़ों में आते थे, आज उस दिन उनकी ड्रेस कुछ अलग है. उस दिन उन्होंने अपनी फॉर्मल ड्रेस पहनी है, वो ड्रेस which he used to wear generally on the prize distribution day or on a special occasion. So on that day Anne Hamel was also dressed formally. And another thing, children were, भाई क्लासरूम में बच्चे तो बैठते ही हैं, बट उनके साथ साथ एक अलग सी चीज क्या थी ऑन दैट डे, जो जनरली बैक बेंचेस होती हैं. आपने देखा होगा क्लास में कुछ बैक बेंचेस होती हैं जो कि जनरली खाली पड़ी हुई रहती हैं, उस पर कोई नहीं बैठता. उन बैक बेंचेस पे कुछ सीनियर सिटीजन्स वहां पर बैठे हुए थे. सो दीज थिंग्स वर अनयूजुअल. व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वाज unusual on that day which was noticed by friends? Number 1, the school was still as a Sunday morning. Classmates were in place. Anne Hamel was dressed formally, and on the back benches, besides children, some adults were also there. Who were those people? Who were those senior citizens? Old hosher, former postmaster, former mayor. Now this question arises: why these senior citizens? Why these adults were there? What they were doing in the classroom? They were there just to pay tribute to Anne Hamel for the sincere service which he has given to their district, to that school, for his continuous sincere service. And he was continuously working in that school for last 40 years. For how many years? For last 40 years. For his dedication, for his sincerity, they were there to pay a tribute. And they all were repenting why they have not learned their lessons carefully, why they have not learned about their language. It means आज उन्हें पछतावा हो रहा है
कि उन्होंने अपने लैंग्वेज को ठीक से क्यों नहीं सीखा, उसकी ग्रामर को क्यों नहीं ठीक से सीखा. नाउ दे आर एज नाउ दे न्यू दिस थिंग. वो जानते थे इस चीज को कि आज उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है. अभी बताया था मैंने आपको द लास्ट लेसन, इसका नाम ही क्यों पड़ा है, बिकॉज दैट वॉज द लास्ट लेसन टॉट बाय एमएमएल. और नॉट ओनली लास्ट लेसन, इट वॉज द लास्ट French language lesson. It was the last French lesson. That's why they have given the title also as the last lesson. Now, when he noticed these unusual things and entered into the class, okay, but he was quite scared. He asked for the permission. M. Hamel simply said, "Yes, come in. It's good you have come." उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए फ्रेंड, नहीं तो मुझे तुम्हारे बिना ही शुरू करना पड़ता. एंड दिस इज द वेरी पेनफुल फॉर हिम. बिकॉज वाई पेनफुल फॉर हिम, क्योंकि उसे अपनी मदर लैंड छोड़ना है. अपनी मदर टंग जो वो उसे वहाँ पढ़ाता था, आज वो मदर टंग वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी. हमेशा हमेशा के लिए वो लैंग्वेज उनसे छीन रही है. दैट्स वाई, बिकॉज ही इज अ पेट्रियोटिक मैन हु एम हेमल, और इसीलिए वो अंदर से बहुत दुखी है. एंड ही डिडंट पनिश टू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लेट. क्यों? क्योंकि वो अपना कोई टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था. ऑन दैट डे ही वॉज फीलिंग ही वॉन्टेड टू गिव द मैक्सिमम. उसे लग रहा था उसे जितना कुछ आता है, ही वॉन्टेड टू जस्ट इम्पार्ट एवरीथिंग विच ही नो अबाउट द लैंग्वेज. दैट्स वाई व्हाट ही सेड, order from Berlin. Now as he started his lesson, okay, he started with that this was his last French lesson. This was his last French lesson as now German is going to be taught in the school. उसने क्या बताया बच्चों को कि आज ये मेरा लास्ट लेसन है, इसके बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा. क्यों? क्योंकि अब आगे से स्कूल में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन. और एमएमएल किस सब्जेक्ट के टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज के. जब वो फ्रेंच पढ़ाते थे तो इसीलिए ये उनका उस स्कूल का लास्ट दिन है. यानी 40 ईयर्स से वो वहाँ उस स्कूल में पढ़ा रहे थे. एंड ही वॉज रियली वेरी इमोशनल, एंड दैट्स वाई ही डिडंट पनिश हिम इन फ्रेंच. ही सिंपली allowed him to come and he simply asked, "Go to your seat." And when friends noticed this thing, he was very surprised to see, and when he come to know that it was the last lesson by M. Hamel, he was very sad to know this. अभी थोड़ी देर पहले वो जो बुक्स उसको बर्डन लग रही थी, just some times ago, which books were merely burden for him, now those books are seeming as if it were his old friend. ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बहुत पुरानी दोस्त है और वो उससे बिछड़ जाएंगे. एकदम से आज उसको अपनी बुक से एकदम से प्यार लगने लगा. After that, M. Hamel asked him to recite the rules of participle. M. Hamel ने उससे कहा कि ठीक है, जरा कल वर्क दिया था, क्या वर्क दिया था, to learn the rules of participles. अब उन्होंने उससे कहा कि तुम मुझे सुनाओ रूल्स. At that time he was feeling very much guilty. Why he was feeling guilty? Now he was realizing why he didn't pay attention towards his studies. अभी तो उसने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी भी नहीं है और वो उससे छीन रही है. He was really very sad. क्यों था वो दुखी? क्योंकि उसे लग रहा था अभी तो उसे फ्रेंच लैंग्वेज आती ही नहीं और ये लास्ट लेसन है, ये ऐसे कैसे हो गया, हाउ इट कुड बी पॉसिबल. अभी तो मुझे लैंग्वेज मैंने सीखी भी नहीं है, अभी मुझे सीखनी है. सो दैट्स वाई. बट ही वॉज फीलिंग गिल्टी बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू रिसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. क्यों नहीं रिसाइट कर पाया? क्योंकि उसने लर्न ही नहीं किया था. लेकिन एम हेमल ने उस दिन उसको पनिशमेंट नहीं दिया और उससे कहा बेटा मैं तुम्हें पनिशमेंट देने की जरूरत ही नहीं है. Do you know why he didn't give any punishment to friend? Because a teacher always gives punishment to his student at his or her fault, just to make him or her realize about his fault. वो उसे एहसास कराने के लिए. लेकिन अगर बिना पनिशमेंट के उस बच्चे को एहसास हो जाए तो फिर पनिशमेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है. Are you getting my point? So here also
because on that day there was no need of punishment, as he himself was realizing, he himself was feeling guilty. Why he didn't pay attention towards his studies? Why did he not learn his lesson? क्यों नहीं पढ़ा उसने? और आज वो इस चीज को लेकर गिल्ट फील कर रहा है. That's why there was no need of punishment. And then M. Hamel blamed himself to the parents as well as to the students also for neglecting the lesson. Now see, French neglected due to. M. Hamel said कि फ्रेंच लैंग्वेज क्यों निग्लेक्ट हुई? निग्लेक्ट किसी एक कारण से नहीं हुई. निग्लेक्ट just because of the students, because they were having the carefree attitude. Generally you have seen also that students are having carefree attitude. They think, okay, today we are not doing this work, tomorrow we will do. आज नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. We used to postpone our work, we used to delay our work, thinking like that we are having lots of time. So that's why he is saying French is neglected just because of the students' carefree attitude. Another point, he has blamed to parents also, because parents used to make their children to work, because they sometimes used to, what they used to do, they used to send them to field to work. इट्स हैपेंस कि कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि बेटा आज ये स्कूल मत जाना, आज थोड़ा सा खेत में काम है, फील्ड में काम है, वहाँ काम करने के लिए पहुंच जाना. तो ही हैज ब्लेम्ड टू पेरेंट्स ऑल्सो. एंड फाइनली ही हैज ब्लेम्ड टू हिमसेल्फ ऑल्सो. उसने कहा कि टीचर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे बिकम कैजुअल एट टाइम्स. कभी कभी वो भी कैजुअल हो जाते हैं. एंड ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही हैज ऑल्सो वेस्टेड सम टाइम, because whenever he wished to go to somewhere, he has sent them to water his garden. भाई उसे कभी बाहर जाना होता तो उन्होंने बच्चों से कह दिया, बेटा आज तुम मेरे गार्डन में पानी डाल देना, ठीक है, आज ठीक है, आज तुम्हारी छुट्टी हो गई. तो he is just thinking that he has also spoiled some precious time of the student. So that's why he has blamed to the students, to the parents as well as himself also. Now, M. Hamel continue with his teaching with fervor and patience. बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े धैर्य के साथ वो पढ़ाते रहे. Period after period he has taken. कभी कभी होता है it was the last day, but he didn't wasted even a single moment. He continuously start teaching. He teach grammar, writing, history and baby's babe. It means baby's babe. Babe is indicating to the primer that alphabets. Like जैसे हमारा हिंदी में आ आ ई ई है, इंग्लिश में ए बी सी डी है, उर्दू में अली बेटे है. In the same way that babies were reciting the French alphabets, that is babe. Okay, and students were responding. The same periods were continuously. Period after period he has taken all the periods, and then he requested to his French people that never leave speaking your language. Keep your language alive. Keep your language alive. And he claimed that language is the only key. Your mother tongue is the only key which can set you free at the time of imprisonment, or you can say at the time of slavery. जब हम गुलाम होते हैं, जब हम कैद कर लिए जाते हैं, उस टाइम पे सिर्फ हमारी लैंग्वेज ही है जो कि हमें आज़ाद करा सकती है. अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अगर एक अब फ्रेंच किसके अंडर में चला गया? जर्मन के. अब वहाँ के सारे लोग अगर जर्मन बोलना शुरू कर देंगे तो उन्हें तो लोग जर्मन समझने लगेंगे. बट they can keep their identity alive by speaking French language. जब तक वो अपनी लैंग्वेज को बोलते रहेंगे तब तक उनकी आइडेंटिटी एज अ फ्रेंच पीपल बनी रहेगी. एंड ही claimed also French language as the most beautiful, simple and logical language. See, DSL, 3 points he has, 3 titles, 3 you can say features
he told about the French language. French is the most beautiful, simple and logical language. हम सबको अपनी भाषा सबसे अच्छी लगती है. We always think that our language is best, our thing is best. In the same way, he is also thinking that French language is the most beautiful, simple and logical language. And after that, he find that some Persian soldiers were passing near the window, and it was the indication that the school is about to be over. He was very, you can say, sad, and with heavy heart, he was giving simply a gesture. He was not able to speak because his throat was choked with emotion. वो पूरे emotion से भर चुका है. He was not able to speak. So that's why he simply made a hand gesture and bid a goodbye by saying that Vive la France. What he said, Vive la France means long live France. उसने फ्रांस के लिए क्या कहा? उसने बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पे लिखा वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस. उसने उस बोर्ड पे वो लिख कर ये इमेजिन किया एज इफ that word is representing to his country, and he go down in front of those words with respect, with full of emotion, and through his hands gesture he simply dismissed the class. Okay, so in this way you have gone through the chapter word by word. You will make a reading. Wherever you will have any doubt, you will leave the question in the comment box and you will read the chapter. Till then, keep reading, enjoy your learning English, and wherever you will have doubt, please contact me. Thank you. Have a good day.